Hello students, today we are going to learn a new chapter from your general science, that is human body and organ system. So in this chapter we are going to learn different type of organ which is present in our human body. So let's start. So human body and organ system. Different organs in our body are working in group so as to smoothly carry out various life process. So in our body there is so many life process are there. So in that different type of organs are included and working together to make that work or carry that work smoothly. So different life process like respiration and digestion, blood circulation, excretory system, reproductive, etc. So these life process takes place in various steps. So specific organ carry out the specific steps. So the life process taking place in different steps or continuous step. So specific organ carry out the specific step. So एक एक step के लिए एक एक अलग अलग organs रहते हैं. Group of organ working together to perform a specific function is called as organ system. So what is organ system? So what organ system is working of organ which is togetherly working to perform a specific function. एक function करने के लिए बहुत सारा organ एक साथ ग्रुप में वर्क करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम. सो ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन is called as organ system. So various organ systems are digestive, respiratory, circulatory, nerve system, excretory, reproductive, skeletal, muscular, etc. So are functioning in our body. So हमारे बॉडी में digestive system है, respiratory system है, circulatory is there, so nerve system is there, excretory system is there, reproduction system is there, skeletal muscular system is also there. So they perform their own function. So this is the organ system and they perform their own function. Energy is essential to operate all the life process in human body. Human body में कोई भी function हो उसको करने के लिए what we need, that is energy. कोई भी work करने के लिए हमें क्या चाहिए? Energy चाहिए. So how we get energy? So energy production occurs within the cell. Cell, you already know that what is cell. So inside the cell what is produce? It produce energy. जो भी हम लोग food खाते हैं and जो भी हम लोग breathe करते हैं oxygen, वो दोनों combine होके क्या मिलता है? Energy. Cells need the supply of soluble nutrient and oxygen for this purpose. So soluble nutrient means जो हम लोग food खाते हैं वो है, and oxygen already I explained. So food and oxygen both are combined together and it produce energy. This supplies take place with the help of respiratory and circulatory system. So रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें ऑक्सीजन मिलता है एंड वो फूड के साथ मिक्स होके क्या होता है? एनर्जी. एंड दैट एनर्जी इज पास थ्रू ऑल द बॉडी. सो हम लोगों के एंटायर बॉडी में एनर्जी कैसे मिलता है? थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में रहता है, जो हार्ट वो सब सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है. दे गेट दैट एनर्जी एंड वो एनर्जी को क्या करता है? बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है. So respiration is carried out through following three steps. So there are three steps. One is external respiration, internal respiration and cellular respiration. एक external respiration है, एक internal respiration है and एक cellular respiration. So what is external, internal and cellular respiration? Let's know about it briefly. So first one is external respiration. In that two type, one is inspiration or expiration, or we can all call inhalation and exhalation. Inspiration और expiration बोल सकते हैं, और inspiration को inhalation and expiration को exhalation बोल सकते हैं. So here inhalation and exhalation क्या होता है? ऑक्सीजन को intake करना and कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स इनटेक, एक्सहेलेशन मीन्स आउट.
So air is taken in through nose and sent towards the lungs through trachea is called as inhalation. Similarly, oxygen from the inspired air goes into blood. Blood carries the carbon dioxide from various parts of the body towards the lungs. This air is given out by exhalation. So what happens in the inhalation? So air is taken in through the nose के थ्रू एयर को पास करते हैं एंड इट सेंड टूवर्ड्स द लंग्स. सो नोज से लंग्स को जो पहुंचता है उसको इनहेलेशन बोलते हैं. सिमिलरली व्हेन इट रीचेस टू द लंग्स, ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोस इनटू ब्लड. सो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है एंड ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द लंग्स. दिस एयर इज गिवन आउट बाय एक्सहेलेशन. ऑक्सीजन को इनटेक ले लेता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन ब्लड, दे एक्सहेल दैट कार्बन डाइऑक्साइड. So both of these processes occurring with the help of lungs are collectively called as external respiration. So inhalation and exhalation both are called as external respiration. So this is about the external respiration. Then what is internal respiration? Exchange of gas between cell and tissue fluid is called as internal respiration. यहाँ पे बॉडी के अंदर ही रेस्पिरेशन होता है. दैट इज द गैसेस बिटवीन सेल एंड टिश्यू इज एक्सचेंज. सो सेल में जो गैसेस रहता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, वो टिश्यू में जाता है एंड टिश्यू में जो रहता है वो सेल में जाता है. सो ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड. So here main work is oxygen moves from blood to tissue and carbon dioxide move from tissue to blood. So this is the internal respiration which takes place inside the body. So oxygen blood से tissue को जाता है and carbon dioxide tissue से blood को. So this is the internal respiration. Next one is cellular respiration. So here, so cellular respiration. So in the cellular respiration, our body produce energy. So how it produce energy? Dissolved nutrients like glucose are slowly burned or oxidized with the help of oxygen. So this glucose combined with oxygen and oxidation takes place and it form energy in the part of ATP, or it produce energy in the form of ATP. ATP means adenosine triphosphate. So waste material like carbon dioxide and water vapors are also produced during this process. So जब energy production होता है, so what are the main two things? That is, one is glucose, another one is oxygen. Both are combined together and it produce energy in the form of ATP as well as carbon dioxide and water. So cellular respiration can be summarized as follows, like, so this C2H12O6 means that is glucose and 6O2 is oxygen and CO2 is carbon dioxide and this one is water and energy in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. So here this glucose and oxygen combine together and oxidation takes place and it produces carbon dioxide, water and energy in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. कितना energy produce होता है? That is 38 ATP. So this is about the cellular respiration. So three type of respiration: external, internal and cellular. So external respiration means we intake of air from the outside and exhale of air from body to outside. So यहाँ पे दो type है, inhalation and exhalation. So internal respiration means that is the gases exchange between cell to tissue and tissue to cell. And the cellular respiration means, so here the production of energy takes place when the nutrient and oxygen is combined. So these three are the types of respiration: external, internal and cellular.
Okay, in our body, there are different type of organ systems are there. In the first one, respiratory system. So here पहला एक है जो respiratory system है. So here we are going to learn about the structure and function of respiratory system. So respiratory system जब हम लोग बोलेंगे तो ये पिक्चर हमें माइंड में आएगा. So this is our human body and it contains a respiratory system. So it includes nasal cavity, means our nose में जो दो cavity है वो है, एंड फैरिंग्स, नोज के हमारा जो यहाँ पे गले में रहता है दैट इज फैरिंग्स, एंड लैरिंग्स वहीं पे थोड़ा सा नीचे लैरिंग्स रहता है, एंड उसके नीचे एक पाइप रहता है दैट इज ट्रेकिया, एंड दिस पाइप डिवाइड इनटू टू पार्ट एंड इट कनेक्टेड विद द टू लंग्स. सो टू लंग्स के साथ कनेक्टेड है. इनसाइड द लंग्स इट कंटेन्स bronchioles, alveoli, and at the last it contains diaphragm. So here these are the part of the respiratory system: nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, lungs, bronchiole, alveoli, and diaphragm. So here now we are going to learn what are these parts and what is the function of this respiratory system. So first part is nose. So nose, respiratory system and respiration begins with nose because हम लोग inhale and exhale कहाँ से करते हैं? nose से करते हैं. nose से हम लोग breathe करते हैं. So air is filtered with the help of hair and mucus present in the nose. So inside our nose there is lots of hair and mucus is present. So whatever we inhale, जो भी हम लोग एयर को inhale करते हैं उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है इट इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड द nose. So first part which include in the respiratory system is nose. After nose, second part is pharynx. So this is the pharynx. So food pipe and windpipe originate in the pharynx. So pharynx, food pipe and windpipe originate in the pharynx. So हमारे नेक के यहाँ पे दो पाइप है, वन इज फूड पाइप अनदर इज विंड पाइप. सो फूड पाइप इट connected to the mouth and wind pipe which is connected to the nose. So wind pipe is present in front of the food pipe. There is a lid at the beginning of the wind pipe. So wind pipe के beginning में एक lid रहता है which is closes when we are taking food. So हम लोग जब food लेते हैं तो वो जो lid है वो close होता है. अगर क्लोज नहीं हुआ जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो नोज के थ्रू बाहर आ जाता है. सो दैट्स वाई इट कंटेन्स अ लिड. सो फूड इनटू फूड पाइप एंड देयर बाय नॉर्मली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू विंड पाइप. अदरवाइज विंड पाइप रिमेन्स ओपन, हेंस द एयर पासेस थ्रू फैरिंग्स इनटू विंड पाइप. सो हम लोग जैसे ही इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और वॉट एवर द गैसेस और एयर विच पासेस through this pharynx and it connected to the wind pipe. So wind pipe में सिर्फ air पास होता है and food pipe में सिर्फ food पास होता है. So next one, wind pipe. Wind pipe is swollen at the beginning due to the sound box. Wind pipe bifurcate into the thorax. One branch enters into the right lungs and the other left into the left lung. So this one is pharynx and here it is wind pipe. ये सब wind pipe है और trachea. So here, so in the beginning of this wind pipe there is a sound box जो हम लोग voice के लिए जो यहाँ पे part है that is sound box. Because of this sound box we can speak. So यहाँ पे हमारा जो भी sound आता है वो sound box के through ही आता है. So larynx के through ही आता है. So this windpipe divide into or bifurcate into two. So here one is connected to the right lungs, another one is connected to the left lung. So right lungs में एक connected हुआ रहता है and left lung में एक connected हुआ. So this is about the nose, pharynx and windpipe. Next part is lungs. Okay, lungs. A lung is present on either side of the heart in thoracic cavity. Thoracic cavity means upper body. So वहाँ पे heart है, heart के दोनों तरफ क्या है? lungs. One is left lung, another one is right lung.
Maximum area of thoracic cavity is occupied by lungs and they cover the maximum part of heart. So maximum thoracic cavity हमारा upper body में full maximum percentage it contains a lungs and heart का maximum part को भी कौन cover करता है, that is lungs. Each lung has double layered covering and it is called as pleura. So each lung has the double layer and that layers are called as pleura. Lungs are elastic like sponge. So lungs are made up of many small compartment and that is called as alveoli. So alveoli means this is the small part. So वहाँ से हम लोगों का जो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो इनहेल एंड एक्सहेल होता है और एक्सचेंज टू एनी अदर बॉडी, so other parts. So here this lungs are made up of many small compartments called as alveoli. Rich network of capillaries is present around each alveoli. So what is capillary? I'll explain in the next. So here यहाँ पे जो भी है this alveoli which is connected to the capillary. So these capillaries are helpful for the blood circulation. So which is present around the each alveolus. So here walls of alveoli and capillaries are extremely thin. So this is alveoli and this is capillary and wall of these both capillary and alveoli is very thin. So thin होने की वजह से क्या होता है, gas exchanges easily takes place from alveoli to capillary and capillary to alveoli. So as large number of alveoli is present in lungs, larger surface is available for gaseous exchange. So यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाता है एज वेल एज ऑक्सीजन इनटेक हो जाता है. सो जैसे कि ऑक्सीजन इनटेक होता है यहाँ पे कैपिलरी में जो ब्लड है, सो ब्लड के साथ मिक्स होके वो प्योर ब्लड बन जाता है एंड इट बिकम्स आरबीसी. सो वो पूरा बॉडी में अदर पार्ट के लिए जाता है. अदर पार्ट में जो भी बैड ब्लड्स रहता है सो उसको और पॉइजनस ब्लड रहता है उसको रिटर्न लेके आता है. So here it contains carbon dioxide. So this blue color means carbon dioxide, it mixed with this blood and red means oxygen is mixed with this blood. So here यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो यहाँ पे रिटर्न आ जाता है एल्वियोलाई में एंड एल्वियोलाई से बाहर आ जाता है एंड इट कनेक्टेड टू द लंग. लंग से हम लोग नोज से ब्रीद आउट करते हैं. So wall of alveoli and capillaries are extremely thin. So gaseous exchange can easily take place across this thin wall. So as large number of alveoli is present in the lungs, larger surface is available for gaseous exchange. So this is about the lung. Now what is or how exchange of gases in lungs takes place? Let's see. Okay, how this exchange of gases in lungs takes place. Gaseous exchange occurs continuously while blood is circulating around the alveoli. So alveoli के around जब भी blood circulate होता है वहाँ पे gaseous exchange takes place होता है. An iron containing protein hemoglobin is present in the RBC, means this red one of blood. Hemoglobin absorbs the oxygen from the air within the alveoli. Simultaneously, carbon dioxide and water vapors move from blood into the alveoli. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको ये इनटेक करता है एंड यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है उसको रिटर्न एल्वियोला में भेजता है. सो साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर मूव फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलाई. दस ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड एंड गिवन आउट बाय एक्सहेलेशन. हम लोग जो ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है एंड बॉडी के पूरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. सिमिलरली वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो ब्लड के साथ एल्वियोलाई में आता है एंड जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है उसको एल्वियोलाई में भेजता है एंड वी आर इनहेल. जो ऑक्सीजन करते हैं उस वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को एक्सहेल करता है. तो एक्सहेल करके वाटर कैसे एक्सहेल होता है, हम लोगों का जो स्वेट होता है वैसे, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग नोज के थ्रू एक्सहेल करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स टेक्स प्लेस.
Next part is diaphragm. A muscular partition is present at the base of thoracic cavity. हमारा जो अपर बॉडी है एंड नीचे जो लोअर बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बीच में एक पार्टीशन रहता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज डायफ्रैगम. So this partition is called as diaphragm. It is present between the thoracic cavity and abdominal cavity. So वो upper body and lower body के बीच में क्या रहता है? This one. Simultaneous rising up of ribs and lowering of diaphragm causes the decrease in pressure on the lungs. Due to this, air moves into the lungs through nose. When ribs return to their original position and diaphragm raises up, pressure on the lungs increases. Due to this, air moves out from the through the nose. जैसे कि रिब्स रेज होता है एंड डायफ्रागम लोअर होता है, हम लोग इनटेक करते हैं, वैसे रिब्स रिटर्न आ जाता है टू इट्स पोजिशन एंड दिस डायफ्रागम रेजेस अप, देन वी एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम लोग इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं ना, तो हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं, थोड़ा सा हमारा मूवमेंट रहता है. तो इनहेल करते कैसा होता है? व्हेन वी आर इनहेल आर रिब्स आर रेजन अप एंड डायफ्रागम लोअर डाउन. सिमिलरली हम लोग जब एक्सहेल करते हैं हमारा रिब्स जो है वो नीचे आ जाता है एंड हमारा डायफ्रागम जो है वो ऊपर आ जाता है. सो व्हेन वी इनहेल, रेजन अप द रिब्स एंड लोअरिंग द डायफ्रागम causes the lung which is inhale and ribs return to their original position and diaphragm raises up, then it is exhale of the gas. The continuous upward and downward movement of diaphragm is necessary to bring out the breathing. So हम लोग जब भी ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है? एक बार ऊपर नीचे हो जाता है. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स रहता है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द diaphragm. So diaphragm is a partition between the lungs and this abdominal cavity, thoracic cavity and abdominal cavity. जैसे कि डायफ्रागम नीचे जाता है हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जैसे कि वो ऊपर आता है हम लोग ब्रीद आउट करते हैं. सो दीज आर द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. I hope everyone clearly understood. Next one is blood circulatory system. Okay, blood circulatory system. Circulatory system perform the function of transport of various substances like water, hormones, oxygen, soluble nutrients and waste material through different organs. An independent system for circulatory system is present in humans and higher animals. It consists of heart, blood vessels and capillaries. So circulatory system में क्या transport होता है? It is a function of transport. The main function is transport of various substances like water transport, hormones, oxygen, soluble nutrients means food and waste material. जो भी waste material produce होता है उसको one part of the body to another part, it transfer from one to another. And so here this blood circulation is present in human as well as higher animals and it consists of three parts. One is heart, blood vessel and capillaries. Let's see heart structure and function. Function of heart and structure of heart. So heart structure and functions. Heart is present almost as the center in thoracic cage. It is present behind the ribs and between two lungs and slightly inclined on left side. So it present in the almost center of thoracic cavity means upper body and which is present behind the ribs and between the lungs. So सामने ribs है and उसके अगल बगल में क्या है? Two lungs and it is slightly inclined. So left side के side थोड़ा सा turn होके ऐसे incline होके है. So size of our heart is equal to one's own fist and its weight is about 360 ग्राम. So fist means हम लोग हाथ को ऐसे पकड़ते हैं तो कैसे रहेगा? So हमारा हार्ट का जो साइज है वो इतना ही रहेगा. So my heart size is only this much. So my fist is this much. So इतना ही है मेरा हार्ट का साइज and its weight is 360 ग्राम. It is covered by double layer which is called as
peritoneal membrane. So heart is covered with the two layer, and these two layers are called as peritoneal membrane. So a fluid is present between two membranes, due to which heart is protected from friction and mechanical shock. So two layers है इसमें, and in between two layers there is a fluid, and this fluid is helped to protect the heart from the friction and mechanical shock. जो भी shock से या जो भी friction से क्या होता है, heart को protect करता है. Human heart is a muscular organ. It is made up of involuntary cardiac muscle. They contract and relax with a definite rhythm, and this is called as beating of heart. हमारा heart sound करता है ना, डब 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 करके. It's only because of this cardiac muscle. So heart is made up of muscle, and this is called as involuntary cardiac muscle. So these contracts and relax. जब contract and relax होता है तभी वहाँ पे sound आता है, rhythm sound आता है, and this rhythm sound is called as beating of heart. Internally, heart is divided into left and right compartments by a vertical portion or partition. Each of those compartments is again divided into two chambers. Thus, in all, heart consists of four chambers. Upper chambers are called as atria. If it is single one, then it is called as atrium. And the lower chambers are ventricles. So this one is the heart. Basically, heart is divided into two compartments. So vertically, एक this one, and the one is this one. एक blue वाला, एक red वाला. So this side is called as left, and this side is called as right. So left compartment and right compartment. Again, this left one is divided into two. One is upper and lower. Similarly, right also divided into two, upper and lower. So totally four chambers, two upper chambers, two lower chambers. So upper chambers are called as atrium, and lower atria and lower chambers are called as ventricle. So this one is left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. So upper one is atria. अगर एक को बोलेंगे तो atrium, दोनों को बोलेंगे तो atria. So atria and ventricle. So left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. So there are four chambers in our heart. There are two compartments, right and left. There are four chambers, two upper and two lower. So this is about the structure of heart. I hope everyone clearly understood. In our next video, we are going to learn about the function of heart, structure and function of blood vessels and capillaries. So till then, take care and study well.